go to the arm, the inside, and come down close to the armpit and the armpit. अब बगल में करें. And come down. Side में. Right side में भी. The tummy region. Go back. Now let's stand up. खड़े होके tapping करेंगे. So around the hip region. You can also keep your hands this way and do the tapping with the sides of your palms. Side से भी हम कर सकते हैं tapping. Around the hip region, this is also where the lymph nodes are. So here also tapping is very important. And start going down on the right leg. नीचे आ जाएं थोड़ा. And go all the way down to the foot. And come up. Now the left side. Go all the way down. The foot, पैर को भी, पंजों को. And slowly start coming up. ऊपर आना शुरू करें. And now relax. Nice way to start, no? Okay. Now we will take our arms to the sides and start moving our arms down. So every time you're moving the arms down, you can also exhale with a little bit of force through the nostrils. नाक से थोड़ा तेज सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाइए हाथों को. You can do this at your own pace also. अपने हिसाब से भी कर सकते हैं. Now back. If you're feeling a little bit of dizzy, then you can exhale slowly also. अब धीरे धीरे भी सांस छोड़ सकते हैं. अपने पेस पे कीजिए, अपने स्पीड पे कीजिए. Do this at your own pace. And relax. Now take your arms up, all the way up, close to the ears, and start moving your arms up and down in the front. हाथों को ऊपर नीचे करें आगे की तरफ. Again, you can synchronize your breath with the movement of the body. सांस को शरीर के हिसाब से करें, हिलाएं. And take your arms up, keep them here. Now we'll do some rotations here. हम हमारे हाथों को rotate करेंगे. So let's start. One arm goes to the front, the other arm goes back. So I see that some of you are swimming already.
So the easy way to do this is take your arms up and simultaneously move both the arms. One to the front, the other one to the back. Left to the front, right to the back. दायां हाथ पीछे, बायां हाथ आगे. And up, go back. Now right arm to the front and left arm back. दायां हाथ आगे की तरफ से, बायां हाथ पीछे की तरफ से. So today we are going to do a lot of such movements. We'll repeat these movements. हाथों को, पैरों को हिलाने के मूवमेंट हम काफ़ी करेंगे क्योंकि यही हमारे शरीर से जो वेस्ट है उसको हटाएगा. All these movements help to remove the toxins from the body. And relax. Relax your hands, shoulders. Now palms are on the waist. And start moving the waist to the front, back, front. So 2 times. And 2 times back. 2 बार आगे, 2 बार पीछे. It's like your body is moving to some rhythm. आपका जो शरीर है ऐसे कोई म्यूजिक पे हिल रहा है, ऐसे हिलाएंगे. ज़्यादा नहीं झुक सकते, कोई बात नहीं, जितना कर सकते उतना करें. You can't bend too much. How much ever your body allows. And come back to the center. Now right and left. दाएं और बाएं. Are you smiling? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? अगर नहीं तो मुस्कुराइए. And come back to the center. Now, lift your heels up. एड़ी को उठाएं. So you can take support of the chair if you want. कुर्सी को पकड़ के कर सकते हैं. Come up, lift the heels up and start pumping your body. अपने शरीर को ऊपर नीचे करना शुरू करें. This is very, very good for your lymphatic system. शरीर के लिए बहुत अच्छा है. Continue. You can take a break but again start doing it. बीच में अगर ब्रेक ले रहे हैं तो वापस से करना शुरू करें. Because for the body to work on this, you have to do this a few times. ये कुछ देर करते रहना पड़ता है. योग के जैसे ही. And relax. Now we'll move our body like a pendulum on the toes and the heels. शरीर को आप पैरों की उंगलियों पे और एड़ी पे हिलाएंगे. Let your arms also move along if they are. And relax. Now we'll do the same thing but right foot to the front, left foot to the back. दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे. Now move from the toes to the heels. Again, this is some kind of a dance. Let your body move. If you want, you can keep less distance between your feet. पैरों में distance कम रख सकते हैं. And relax. Now left foot to the front, right foot back. बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे.
and relax. Come back to the center. Now we'll start with our asanas. But before we start with the asanas, I would just like to tell you that tomorrow we have a session that everybody wants to do. The session is on fat burning of the tummy. कल का हमारा सेशन है जो आप सब करना चाहते हैं वो है कि हमारे पेट का फैट हम कैसे कम करें. No, so tomorrow be there and you will learn, you will do asanas together on how to burn the fat around the tummy region. पेट से फैट कैसे बर्न करना है कल के सेशन में हम ये देखेंगे. तो आप कल ज़रूर आइए. You know, you all are doing very well till now. Continue with the same commitment. अभी तक जिस commitment से आप काम कर रहे हैं इस challenge में वैसे ही आप बने रहिए. Because you know this is a habit. This is how it becomes a habit when you come on a regular basis. ये आदत तभी बनती है योग की. स्वस्थ तभी रहते जब हम ये रोज़ करते हैं. ठीक है? Now let's start with our asanas. Stand with our feet hip width apart. पैरों में hips जितना distance रखें. And stretch your lips also. Keep a nice smile on your face. चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट. And take your left arm up, all the way up, close to the left ear. And bend from your waist to the right side and look at your left palm. बायां हाथ ऊपर और दाईं तरफ कमर से झुकेंगे. कोणासन 1. Now inhale, stretch your left arm up a little bit and exhale, bend a little bit more to the right side. सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर स्ट्रेच करें और छोड़ते हुए कमर से दाईं तरफ झुकेंगे. And inhale, come up. Exhale, relax your left arm. Now on the other side, right arm up, दाएं हाथ ऊपर. And bend from your waist to the left. कमर से बाईं तरफ झुकें. See if you can stretch your right arm a little bit more. Can you touch the ceiling? Inhale, stretch your right arm up a little bit more. सांस लेते हुए दाएं हाथ को लंबा करें और and exhale, bend a little bit more to the left. सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें. See if your body is going to the front, adjust your hips. कमर से अपने शरीर को सीधा करें अगर आगे जा रहा है शरीर तो. And come up. Relax your right arm. Now increase the distance between your feet a little bit more. थोड़ा पैरों में distance बढ़ाएं. Again, inhale your left arm up, सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर. And exhale this time, bend from your waist, your entire upper body to the right side. सांस छोड़ते हुए अपने कमर से पूरी तरह अपने बाएं हाथ को भी दाईं तरफ ले जाएं. And let's pump our body like this, up and down. ऊपर नीचे शरीर को हिलाते रहेंगे. इस तरह के काफ़ी movements आज हम करेंगे. Do a lot of movements like this today. And come up. Relax. Now on the other side. बाईं तरफ. So those who are not doing this on the chair and they're finding it difficult to bend too much, you can bend a little less. बिना कुर्सी के कर रहे हैं, चाहे तो थोड़ा कम भी bend कर सकते हैं. Like there's a spring in your body. And come up. Relax. Now stand with your feet shoulder width apart. पैरों में कंधों जितना distance रखें. Now we'll do Kati Chakrasana, the standing twist. So inhale, take your arms to the front. सांस लेते हुए हाथ आगे लेके जाएं.
And as you exhale, twist to the right. सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ twist करें. So keep looking over your right shoulder. दाईं तरफ से पीछे देखेंगे. And you can also do the movement here. If you want, you can twist. Like I said, you can do this at your own pace. अपने हिसाब से कर सकते हैं. And if you're feeling some discomfort in the knees, you can keep the knees soft, micro bend. घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं. To the center and to the left. And come back to the center. Relax your hands. Now we'll do some asanas sitting. So we are going to sit in Sukhasana. We'll use the chair in some time again, but for now we'll sit comfortably in Sukhasana. Now we'll do the same thing. We did the standing Konasana. Now we will bend to the sides and stretch our arms to the sides. So right palm to the right side, left arm up, take it to the left side. And now let's start with rotations here. For your comfort, you can sit and do this on the chair also. अपने अगर चाहें तो chair पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो भी comfortable है. Clockwise rotations. चालू रखें, continue. Opposite direction, दूसरी दिशा में. If your arms are paining, you can take a little break in between. अगर हाथ दुख रहे हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक ले सकते हैं. And come back to the center. Now onto the left. बाईं तरफ. Stretch your arm. Right arm to the left side. दायां हाथ बाईं तरफ. And let's begin. This is very important to get that system, lymphatic system activated. ये हमारे system को, lymphatic system को सचेत करने के लिए अच्छा है ये. Opposite, विपरीत दिशा में. And come back to the center. Relax your hands. Now let's get ready for Marjari Asana. We'll sit on the palms and knees. If you're using the chair, you can just place the palms on the chair, feet on the mat. And if you're using the mat to do this and you want some comfort for your knees, some support, keep a cushion under your knees. घुटनों के नीचे cushion रख के कर सकते हैं mat पे अगर कर रहे हैं तो. Palms are shoulder width apart and your knees are hip width apart. दोनों हथेलियां कंधों के बराबर, घुटने hips के बराबर. Now we will take the right leg up, lift it up, lift the right knee up a little bit off the mat, and let's start making circles from the outside. 1, 2, continue. 3, 4, 5, 6. Now opposite.
1, 2, 3, 4, 5, 6, and relax. Now with the left leg, lift your left knee up and let's start from the outside. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outside now, from inside outside. 1, 2. Are you making big circles or are you making small circles? क्या आप बड़े circle बना रहे हैं या छोटे छोटे circles बना रहे हैं? And relax. Now stay there and lift your right knee up again. दाएं घुटने को ऊपर उठाएंगे. Now we will take it to the side. 1, 2. So in this, if you want, you can place the knee on the mat when you're doing this, when you come back to the center. And relax. Now with the left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and relax. We'll do one more variation, but just come back once and relax your hips a little bit if you feel like. थोड़ा पैरों को relax कर सकते हैं. You can move your buttocks a little bit. Relax and come back again. Now this time we are going to lift the leg up. 1, 2, behind. 3, पीछे की तरफ. 4, 5, 6, 7, little bit more. 8, 9, 10. Now, right leg. Sorry, the left leg. For support, you can place the knee on the mat. And relax. Relax your buttocks a little bit. You can move right to left, left to right. Now, we will lie down on the tummy. Stretch your arms to the front. पेट के बल पे आ जाए, हाथ आगे की तरफ. Now we'll lift the opposite arm and the opposite leg. So if you're lifting the right arm up, you lift the left leg up. दायां हाथ ऊपर और बायां पैर ऊपर साथ में. Then opposite, left arm up, right leg up. Let's continue. Right, left, right, left. And now those who want to add a little bit of a challenge to this, don't place the legs and the palms, arms on the mat. Just lift them up in the air. Lift them higher. चाहे तो हाथ पैर को ऊपर रखे और ऊपर उठा सकते हैं. विपरीत शलभासन. Little variation. And come back down. विश्राम करें. We'll do this one more time. एक और बार करेंगे. Arms to the front. हाथ आगे. Let's get ready. Let's begin. Right, left, right, left. Continue. चालू रखें. Are you happy Superman? Happy Superwoman?
relax. Relax your forehead on the top of your palms. माथे को विश्राम दें हाथों के ऊपर. And now slowly roll over to your back. पीठ के बल पे लेट जाएं. Stretch your legs. पैरों को सीधा रखें. Now, let's start moving the feet towards you and away from you. एड़ी से पैरों को अपनी तरफ और दूसरी तरफ पुश करें. Breathing in, pull them towards you. Breathing out, away from you. सांस लेते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए दूसरी तरफ. And come back to the center and let's do some gentle rotations from the ankle. एड़ी से दाईं तरफ से पैरों को घुमाएंगे, clockwise direction. Opposite, विपरीत बाईं तरफ से. And relax. Now bend both the legs. Feet are on the mat. पैरों को मोड़ लें. Now place the right foot, like right ankle, onto the left knee or close to the left knee. अपने दाएं एड़ी को बाएं घुटने के पास में रखें. And now move the right leg in and out. We'll do some variation of Dakshina Murti Asana. अंदर बाहर पैर को हिलाएंगे. If you want, you can take the support of your right palm to do this. दाएं हाथ से कर सकते हैं, पैर को पकड़ के. And relax. Relax the right leg. Now left ankle on the right knee. बाईं एड़ी दाएं घुटने के पास में या उसके ऊपर. And move the left leg in and out. Continue. It's like your body is, the entire body is moving in one rhythm, isn't it? आपको पूरा शरीर जो है एक साथ रिदम में हिल रहा है. And relax. Now join both the feet and namaste. दोनों पैरों से नमस्ते कर लें. Drop your knees to both the sides. Supta Baddha Konasana. Now here we are going to start moving the legs up and down. Okay. Supta Titli Asana, like a butterfly. You can move them all the way up and down or just close to the mat also. Both are fine. दोनों कर सकते हैं. घुटनों को पूरा ऊपर ले आए या मैट के पास में रख के भी हिला सकते हैं. Like a butterfly, happy butterfly. Right. मुस्कुराते हुए तितली हैं आप. All colorful happy butterflies in the house today. Nicely move your wings. अच्छे से अपने पंखों को हिलाएंगे. And relax. Now you can stretch the legs straight. पैरों को सीधा कर ले अभी के लिए.
Now hold the opposite elbows. दोनों कोहनियों को पकड़ लें कानों के पास में. Now we'll do some swinging of our arms, right to left and left to right. Keep your arms close to the ears and move. हाथों को कान के पास में रख के ही swing करेंगे अपने हाथों को. Now from here, start moving your arms. You can relax swinging. Relax your arms and move them front and back. Close to the ears and close to the tummy. पेट के पास और कानों के पास. Swing your arms front and back nicely. Very good. Now as you take the arms close to the ears, start moving them right and left and slowly start bringing them towards the tummy. दाएं बाएं हाथ को हिलाते हुए आगे ले आए हाथों को. And take them back again close to the ears. कानों के पास में लेके जाएं. And continue doing this. चालू रखें. Like you're cradling a baby. जैसे आप एक बच्चे को सुलाते हैं थोड़ा हिला के, वैसे हिलाएंगे हाथों को. Like a cradle pose with the arms. And come back. Now bend your arms, place your elbows onto the mat on the side. कोहनियों को ज़मीन पे रखें साइड में. And from the elbows move your arms front and back. आगे पीछे हाथ को लेके जाएं कोहनियों से. And relax. Relax your arms. Now bring the knees close to the chest. Last one, relaxing asana, Pavan Muktasana. Wrap your arms around the legs or around the thighs also. चाहे तो हाथ को जंघा से भी, पैरों को जंघा से पकड़ लें. And lift your upper body up if you can. कर सकते हैं तो शरीर को ऊपर उठा लें, ऊपर के शरीर को. Swing your body front and back. आगे पीछे करें शरीर को. Right and left, दाएं बाएं. And relax. Keep lying down with your eyes closed. आंखें बंद करके कुछ देर विश्राम करेंगे. Take a breath in. And breathe out. One more long deep breath in. And exhale completely. And slowly with every exhalation, start dropping the weight of your body onto the mat.
धीरे धीरे अपने शरीर का वजन मैट पे रखते जाएं। And feel the body becoming lighter and lighter. आपका शरीर और हल्का होते जा रहा है। Take a breath in and breathe out. And keeping your eyes closed, turn to the right side and keep lying down. आंखें बंद रखें, दाईं ओर करवट ले लें. And you may slowly sit up. And gently you may open your eyes. Now we'll do a cooling pranayama called Chandra Bheda. So for Chandra Bheda, the hand position remains the same. Chin mudra with the left hand and Nasikagra mudra with the right hand. Chandra Bheda pranayam जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, इसके लिए सूर्य बेदा के जैसे ही हाथ को रखेंगे. चिन मुद्रा बाएं हाथ से, दाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा. Just the breathing is different. Let's close our eyes. आंखें बंद कर लें. Now inhale from the left nostril. बाएं नासिका से सांस अंदर. Exhale through the right. दाएं से बाहर. Inhale from the left. बाएं से सांस अंदर. Exhale through the right. दाएं से बाहर. Inhale from the left. बाएं से अंदर. Exhale through the right. दाएं से बाहर. Now inhale from the left and continue. बाएं नासिका से सांस अंदर लें और चालू रखें. And as you exhale through the right nostril, you may relax. दाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें. We'll do a short meditation. Keep a gentle smile on your face. चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट. Take a breath in
and out. Become aware of your breath. अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे. Slowly the mind is coming to the present moment. धीरे धीरे आपका मन वर्तमान क्षण में आते जा रहा है. The mind is becoming more clear. मन और साफ होते जा रहा है. Relax more and more. पूरी तरह विश्राम करें. ओम शांति शांति शांति. Take a breath in and breathe out. And slowly and gradually, with a nice smile, you may open your eyes. मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं. How are you feeling in the body and how is the mind? आपका शरीर कैसा है, आपका मन कैसा है? Write down in the chat box and let us know. हमें लिख के बताइए comment section में. You know, for our body, we do the asana, the cleansing, but for the mind, to keep the mind clean, meditation is important. शरीर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई की ज़रूरत है और वो ध्यान से होती है. So quickly write down in the comment section. Also drop hearts. हमें hearts भेजिए आप जल्दी से. And tomorrow, just a little reminder, we have a session on how to burn the fat around the tummy region. आपके पेट के यहाँ का फैट कैसे कम करना है, इसके ऊपर हमारा सेशन है कल. And congratulations to all of you. You're doing very, very well. And just few more days to go of this challenge. Just continue with the same commitment. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक. कुछ थोड़े दिन और बचे हैं. आप इसी commitment के साथ रहिए इस challenge में. And we'll see you tomorrow. Namaste.
Namaste everyone and welcome to the free online yoga challenge with the Art of Living and Shri Shri School of Yoga. My name is Isha. And I'm Mayur. And quickly write down in the chat box how many days of this challenge you have attended till now. ये challenge के कितने दिन आपने attend किए ये हमें chat box में बता दीजिए. So today's session is on full body detox. How do we do that? By working on our lymphatic system. You know, our body on a day-to-day basis accumulates some waste material, some excessive fluid that has to be thrown out of the body for its proper functioning to maintain our immunity. And that is possible when we move our muscles. When we contract, we stretch our muscles, the lymphatic system is able to work, it throws out the waste material from the body. देखिए हमारे शरीर में रोज़मर्रा कुछ ना कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल कुछ पदार्थ होते हैं जो हमें शरीर के बाहर फेंकना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं. और ये कैसे कर सकते हैं हम जब हमारे शरीर को हिलाते हैं, जब हमारे मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब ये एक्सेसिव फ्लूइड जो है पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है. सो शैल वी बिगिन? Yes. शुरू करें? Let's begin. So let's sit on our mats. Eyes closed. We'll chant Om 3 times. Breathe in for Om. And wherever your mind is wandering, bring it back to this moment. आपका मन जहाँ भी जा रहा है इस क्षण में लेके आ जाएं. And slowly and gradually you may open your eyes. So today we are going to start with Surya Beda Pranayam. For this, join the tip of the left thumb and the index finger together. The rest of the 3 fingers are open. In Chin Mudra. Chin Mudra bana le. Left hand is on the left knee, palm is facing up. Now place the index finger and the middle finger of the right hand in between the eyebrows. पहली 2 उंगलियों को दाएं हाथ की भुवों के बीच में रख लें. Right thumb gently placed on the right nostril and the right ring finger and the little finger placed on the left nostril. दायां अंगूठा दाईं नासिका पे और दाईं रिंग फिंगर और छोटी फिंगर बाईं नासिका पे. लेट्स क्लोज आवर आईज. आंखें बंद. नाउ फॉर सूर्य बेदा, यू इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. दाईं नासिका से सांस अंदर. यू कैन क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. बाईं नासिका को बंद कर सकते हैं. Close the right nostril, open the left nostril. दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका को खोलें and exhale through the left nostril. बाईं नासिका से सांस बाहर. Inhale from the right, दाईं से सांस अंदर. Exhale through the left, बाईं से बाहर. Inhale from the right and continue on your own. दाएं नासिका से सांस अंदर ले और चालू रखें. Long and deep breaths. लंबी गहरी सांसें.
कंटिन्यू, चालू रखेंगे, फ्यू मोर राउंड्स. Last round. And as you exhale through the left nostril, you may relax. बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें. And become aware of the sensations within. शरीर में जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति सजग हो जाएं. And you may open your eyes. सूर्यपेदा प्राणायाम is very good to warm up your body. ये शरीर को थोड़ा गर्म करने में अच्छा है. So I'll also teach you one cooling pranayama in the end. So stick with us till the end. एक शरीर को ठंडक देने वाला प्राणायाम भी अंत में सिखाएंगे, तो रहिए हमारे साथ. Now let's begin. We'll start with some body tapping today. So let's start from the head. सर से हम थोड़ा अपने आप को थपथपाना शुरू कर देंगे. From the front, go to the sides and keep going back. Go all the way down to the neck region, गर्दन पे भी जाएंगे. And from the neck, go to the shoulders, कंधों तक भी जाएंगे. You can tap yourself a little hard. थोड़ा हम जोर से टैप कर सकते हैं. प्रेशर अपने हिसाब से आप चेंज कीजिए. So keep moving from the neck to the shoulders. गर्दन से कंधों तक थोड़ा हिलाते रहेंगे, हमारे थपथपाते रहेंगे. And also you can tap on the face before we go to the neck and the throat region. Come down from the face to the chin. ये हमने थोड़ा हमारे चेहरे के लिए भी कर सकते हैं हम. Now go down on the neck to the shoulder blade region, to the collarbone region, the chest region. छाती के यहाँ भी टैप कर सकते हैं. साइड में राइट साइड. And continue, go on the arm, go on the arm. हाथ से थोड़ा नीचे टैप करना शुरू करें. Now the inside. Come down, all the way down to the armpit. अभी हमारे बगल में भी आके हम टैप करेंगे. You know there is something called the lymph nodes. हमारे शरीर में एक lymph nodes होते हैं छोटे छोटे से. तो ये armpit के यहाँ पे, neck पे, we all have these lymph nodes in the body. So when you tap them, you stimulate them. It aids the lymphatic drainage process. हमारे शरीर से पदार्थों को बाहर निकालने के लिए टैपिंग ज़रूरी है लिम्फ नोड्स के वहाँ पे. Now on the left side, from the shoulder, go to the arm. The inside. And come down
close to the armpit and the armpit. अब बगल में करें. And come down. Side में. Right side में भी. The tummy region. Go back. Now let's stand up. खड़े होके tapping करेंगे. So around the hip region. You can also keep your hands this way and do the tapping with the sides of your palms. Side से भी हम कर सकते हैं tapping. Around the hip region, this is also where the lymph nodes are. Here also tapping is very important. And start going down on the right leg. नीचे आ जाएं थोड़ा. And go all the way down to the foot. And come up. Now the left side. Go all the way down. The foot. पैर को भी, पंजों को. And slowly start coming up. ऊपर आना शुरू करें. And now relax. Nice way to start, no? Okay. Now we will take our arms to the sides and start moving our arms down. So every time you're moving the arms down, you can also exhale with a little bit of force through the nostrils. नाक से थोड़ा तेज सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाइए हाथों को. You can do this at your own pace also. अपने हिसाब से भी कर सकते हैं. Now back. If you're feeling a little bit of dizzy, then you can exhale slowly also. अब धीरे धीरे भी सांस छोड़ सकते हैं. अपने पेस पे कीजिए, अपने स्पीड पे कीजिए. Do this at your own pace. And relax. Now take your arms up, all the way up, close to the ears, and start moving your arms up and down in the front. हाथों को ऊपर नीचे करें आगे की तरफ. Again, you can synchronize your breath with the movement of the body. सांस को शरीर के हिसाब से करें, हिलाएं. And take your arms up, keep them here. Now we'll do some rotations here. हम हमारे हाथों को rotate करेंगे. So let's start. One arm goes to the front, the other arm goes back. So I see that some of you are swimming already. So the easy way to do this is take your arms up and simultaneously move both the arms. One to the front, the other one to the back. Left to the front, right to the back. दायां हाथ पीछे, बायां हाथ आगे.
hand up, go back. Now right arm to the front and left arm back. दायां हाथ आगे की तरफ से, बायां हाथ पीछे की तरफ से. So today we are going to do a lot of such movements. We'll repeat these movements. हाथों को, पैरों को हिलाने के मूवमेंट हम काफ़ी करेंगे क्योंकि यही हमारे शरीर से जो वेस्ट है उसको हटाएगा. All these movements help to remove the toxins from the body. And relax. Relax your hands, shoulders. Now palms are on the waist. And start moving the waist to the front, back, front. So 2 times. And 2 times back. 2 बार आगे, 2 बार पीछे. It's like your body is moving to some rhythm. आपका जो शरीर है ऐसे कोई म्यूजिक पे हिल रहा है, ऐसे हिलाएंगे. ज़्यादा नहीं झुक सकते, कोई बात नहीं, जितना कर सकते उतना करें. You can't bend too much. How much ever your body allows. And come back to the center. Now right and left, दाएं और बाएं. Are you smiling? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? अगर नहीं तो मुस्कुराइए. And come back to the center. Now, lift your heels up. एड़ी को उठाएं. So you can take support of the chair if you want. कुर्सी को पकड़ के कर सकते हैं. Come up, lift the heels up and start pumping your body. अपने शरीर को ऊपर नीचे करना शुरू करें. This is very very good for your lymphatic system. शरीर के लिए बहुत अच्छा है. Continue, continue. You can take a break, but again start doing it. बीच में अगर ब्रेक ले रहे हैं तो वापस से करना शुरू करें. Because for the body to work on this, you have to do this a few times. ये कुछ देर करते रहना पड़ता है. योग के जैसे ही. And relax. Now we'll move our body like a pendulum on the toes and the heels. शरीर को अब पैरों की उंगलियों पे और एड़ी पे हिलाएंगे. Let your arms also move along if they are. And relax. Now we'll do the same thing, but right foot to the front, left foot to the back. दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे. Now move from the toes to the heels. Again, this is some kind of a dance. Let your body move. If you want, you can keep less distance between your feet. पैरों में distance कम रख सकते हैं. And relax. Now left foot to the front, right foot back. बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे. And relax, come back to the center. Now we'll start with our asanas. But before we start with the asanas, I would just like to tell you that tomorrow we have
a session that everybody wants to do. The session is on fat burning of the tummy. कल का हमारा सेशन है जो आप सब करना चाहते हैं, वो है कि हमारे पेट का फैट हम कैसे कम करें. So tomorrow be there and you will learn, you will do asanas together on how to burn the fat around the tummy region. पेट से फैट कैसे बर्न करना है, कल के सेशन में हम ये देखेंगे. तो आप कल ज़रूर आइए. You all are doing very well till now. Continue with the same commitment. अभी तक जिस commitment से आप काम कर रहे हैं इस challenge में, वैसे ही आप बने रहिए. Because this is a habit. This is how it becomes a habit when you come on a regular basis. ये आदत तभी बनती है योग की, स्वस्थ तभी रहते जब हम ये रोज़ करते हैं. ठीक है? Now let's start with our asanas. Stand with our feet hip width apart. पैरों में hips जितना distance रखें. And stretch your lips also. Keep a nice smile on your face. चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट. And take your left arm up, all the way up, close to the left ear. And bend from your waist to the right side. And look at your left palm. बायां हाथ ऊपर और दाईं तरफ कमर से झुकेंगे. कोणासन 1. Now inhale, stretch your left arm up a little bit and exhale, bend a little bit more to the right side. सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर स्ट्रेच करें और छोड़ते हुए कमर से दाईं तरफ झुकेंगे. And inhale, come up. Exhale, relax your left arm. Now on the other side, right arm up, दाएं हाथ ऊपर. And bend from your waist to the left. कमर से बाईं तरफ झुकें. See if you can stretch your right arm a little bit more. Can you touch the ceiling? Inhale, stretch your right arm up a little bit more. सांस लेते हुए दाएं हाथ को लंबा करें और and exhale, bend a little bit more to the left. सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें. See if your body is going to the front, adjust your hips. कमर से अपने शरीर को सीधा करें अगर आगे जा रहा है शरीर तो. And come up. Relax your right arm. Now increase the distance between your feet a little bit more. थोड़ा पैरों में distance बढ़ाएं. Again, inhale your left arm up. सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर. And exhale this time, bend from your waist, your entire upper body to the right side. सांस छोड़ते हुए अपने कमर से पूरी तरह अपने बाएं हाथ को भी दाईं तरफ ले जाएं. And let's pump our body like this, up and down. ऊपर नीचे शरीर को हिलाते रहेंगे. इस तरह के काफ़ी movements आज हम करेंगे. We'll do a lot of movements like this today. And come up. Relax. Now on the other side. बाईं तरफ. So those who are not doing this on the chair and they're finding it difficult to bend too much, you can bend a little less. बिना कुर्सी के कर रहे हैं, चाहे तो थोड़ा कम भी bend कर सकते हैं. Like there's a spring in your body. And come up. Relax. Now stand with your feet shoulder width apart. पैरों में कंधों जितना distance रखें. Now we'll do Kati Chakrasana, the standing twist. So inhale, take your arms to the front. सांस लेते हुए हाथ आगे लेके जाएं. And as you exhale, twist to the right. सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ twist करें. So keep looking over your right shoulder.
दाईं तरफ से पीछे देखेंगे. And you can also do the movement here. If you want, you can twist. Like I said, you can do this at your own pace. अपने हिसाब से कर सकते हैं. And if you're feeling some discomfort in the knees, you can keep the knees soft, micro bend. घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं. To the center and to the left. And come back to the center. Relax your hands. Now we'll do some asanas sitting. So we are going to sit in Sukhasana. We'll use the chair in some time again, but for now we'll sit comfortably in Sukhasana. Now we'll do the same thing. We did the standing Konasana. Now we will bend to the sides and stretch our arms to the sides. So right palm to the right side, left arm up, take it to the left side. And now let's start with rotations here. For your comfort, you can sit and do this on the chair also. अपने अगर चाहें तो chair पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो भी comfortable है. Clockwise rotations. चालू रखें, continue. Opposite direction, दूसरी दिशा में. If your arms are paining, you can take a little break in between. अगर हाथ दुख रहे हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक ले सकते हैं. And come back to the center. Now onto the left. बाईं तरफ. Stretch your arm. Right arm to the left side. दायां हाथ बाईं तरफ and let's begin. This is very important to get that system, lymphatic system activated. ये हमारे system को, lymphatic system को सचेत करने के लिए अच्छा है ये. Opposite, विपरीत दिशा में. And come back to the center. Relax your hands. Now let's get ready for Marjari Asana. You'll sit on the palms and knees. If you're using the chair, you can just place the palms on the chair, feet on the mat. And if you're using the mat to do this and you want some comfort for your knees, some support, keep a cushion under your knees. घुटनों के नीचे cushion रख के कर सकते हैं mat पे अगर कर रहे हैं तो. Palms are shoulder width apart and your knees are hip width apart. दोनों हथेलियां कंधों के बराबर, घुटने hips के बराबर. Now we will take the right leg up, lift it up, lift the right knee up a little bit off the mat, and let's start making circles from the outside. 1, 2, continue. 3, 4, 5, 6. Now opposite. 1, 2, 3, 4, 5,
6, and relax. Now with the left leg, lift your left knee up and let's start from the outside. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outside now, from inside outside. 1, 2. Are you making big circles or are you making small circles? क्या आप बड़े circle बना रहे हैं या छोटे छोटे circles बना रहे हैं? And relax. Now stay there and lift your right knee up again. दाएं घुटने को ऊपर उठाएंगे. Now we will take it to the side. 1, 2. So in this, if you want, you can place the knee on the mat when you're doing this, when you come back to the center. And relax. Now with the left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and relax. We'll do one more variation, but just come back once and relax your hips a little bit if you feel like. थोड़ा पैरों को relax कर सकते हैं. You can move your buttocks a little bit. Relax. And come back again. Now this time we are going to lift the leg up. 1, 2, behind. 3, पीछे की तरफ. 4, 5, 6, 7, little bit more. 8, 9, 10. Now, right leg. Sorry, the left leg. For support, you can place the knee on the mat. And relax. Relax your buttocks a little bit. You can move right to left, left to right. Now we will lie down on the tummy. Stretch your arms to the front. पेट के बल पे आ जाए, हाथ आगे की तरफ. Now we'll lift the opposite arm and the opposite leg. So if you're lifting the right arm up, you lift the left leg up. दायां हाथ ऊपर और बायां पैर ऊपर साथ में. Then opposite, left arm up, right leg up. Let's continue. Right, left, right, left. And now those who want to add a little bit of a challenge to this, don't place the legs and the palms, arms on the mat. Just lift them up in the air. Lift them higher. चाहे तो हाथ पैर को ऊपर रखे और ऊपर उठा सकते हैं. विपरीत शलभासन. Little variation. And come back down. विश्राम करें. We'll do this one more time. एक और बार करेंगे. Arms to the front. हाथ आगे. Let's get ready. Let's begin. Right, left, right, left. Continue. चालू रखें. Are you happy Superman? Happy Superwoman? And
relax. Relax your forehead on the top of your palms. माथे को विश्राम दें हाथों के ऊपर. And now slowly roll over to your back. पीठ के बल पे लेट जाएं. Stretch your legs. पैरों को सीधा रखें. Now, let's start moving the feet towards you and away from you. एड़ी से पैरों को अपनी तरफ और दूसरी तरफ पुश करें. Breathing in, pull them towards you. Breathing out, away from you. सांस लेते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए दूसरी तरफ. And come back to the center and let's do some gentle rotations from the ankle. एड़ी से दाईं तरफ से पैरों को घुमाएंगे, clockwise direction. Opposite, विपरीत बाईं तरफ से. And relax. Now bend both the legs. Feet are on the mat. पैरों को मोड़ लें. Now place the right foot, like right ankle, onto the left knee or close to the left knee. अपने दाएं एड़ी को बाएं घुटने के पास में रखें. And now move the right leg in and out. We'll do some variation of Dakshina Murti Asana. अंदर बाहर पैर को हिलाएंगे. If you want, you can take the support of your right palm to do this. दाएं हाथ से कर सकते हैं, पैर को पकड़ के. And relax. Relax the right leg. Now left ankle on the right knee. बाईं एड़ी दाएं घुटने के पास में या उसके ऊपर. And move the left leg in and out. Continue. It's like your body is, the entire body is moving in one rhythm, isn't it? आपको पूरा शरीर जो है एक साथ रिदम में हिल रहा है. And relax. Now join both the feet and namaste. दोनों पैरों से नमस्ते कर लें. Drop your knees to both the sides. Supta Baddha Konasana. Now here we are going to start moving the legs up and down. Okay. Supta Titli Asana, like a butterfly. You can move them all the way up and down or just close to the mat also. Both are fine. दोनों कर सकते हैं. घुटनों को पूरा ऊपर ले आए या मैट के पास में रख के भी हिला सकते हैं. Like a butterfly, happy butterfly. Right. मुस्कुराते हुए तितली हैं आप. All colorful happy butterflies in the house today. Nicely move your wings. अच्छे से अपने पंखों को हिलाएंगे. And relax. Now you can stretch the legs straight. पैरों को सीधा कर ले अभी के लिए.
Now hold the opposite elbows. दोनों कोहनियों को पकड़ लें कानों के पास में. Now we'll do some swinging of our arms, right to left and left to right. Keep your arms close to the ears and move. हाथों को कान के पास में रख के ही स्विंग करेंगे अपने हाथों को. Now from here, start moving your arms. You can relax swinging. Relax your arms and move them front and back. Close to the ears and close to the tummy. पेट के पास और कानों के पास. Swing your arms front and back nicely. Very good. Now as you take the arms close to the ears, start moving them right and left and slowly start bringing them towards the tummy. दाएं बाएं हाथ को हिलाते हुए आगे ले आए हाथों को. And take them back again close to the ears. कानों के पास में लेके जाएं. And continue doing this. चालू रखें. Like you're cradling a baby. जैसे आप एक बच्चे को सुलाते हैं थोड़ा हिला के, वैसे हिलाएंगे हाथों को. Like a cradle pose with the arms. And come back. Now bend your arms, place your elbows onto the mat on the side. कोहनियों को ज़मीन पे रखें साइड में. And from the elbows move your arms front and back. आगे पीछे हाथ को लेके जाएं कोहनियों से. And relax. Relax your arms. Now bring the knees close to the chest. Last one, relaxing asana, Pavan Muktasana. Wrap your arms around the legs or around the thighs also. चाहे तो हाथ को जंघा से भी, पैरों को जंघा से पकड़ लें. And lift your upper body up if you can. कर सकते हैं तो शरीर को ऊपर उठा लें, ऊपर के शरीर को. Swing your body front and back. आगे पीछे करें शरीर को. Right and left, दाएं बाएं. And relax. Keep lying down with your eyes closed. आंखें बंद करके कुछ देर विश्राम करेंगे. Take a breath in. And breathe out. One more long deep breath in. And exhale completely. And slowly with every exhalation, start dropping the weight of your body onto the mat.
धीरे धीरे अपने शरीर का वजन मैट पे रखते जाएं। And feel the body becoming lighter and lighter. आपका शरीर और हल्का होते जा रहा है। Take a breath in and breathe out. And keeping your eyes closed, turn to the right side and keep lying down. आंखें बंद रखें, दाईं ओर करवट ले लें. And you may slowly sit up. And gently you may open your eyes. Now we'll do a cooling pranayama called Chandra Bheda. So for Chandra Bheda, the hand position remains the same. Chin mudra with the left hand and Nasikagra mudra with the right hand. Chandra Bheda pranayam जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, इसके लिए सूर्य बेदा के जैसे ही हाथ को रखेंगे. चिन मुद्रा बाएं हाथ से, दाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा. Just the breathing is different. Let's close our eyes. आंखें बंद कर लें. Now inhale from the left nostril. बाएं नासिका से सांस अंदर. Exhale through the right. दाएं से बाहर. Inhale from the left. बाएं से सांस अंदर. Exhale through the right. दाएं से बाहर. Inhale from the left. बाएं से अंदर. Exhale through the right. दाएं से बाहर. Now inhale from the left and continue. बाएं नासिका से सांस अंदर लें और चालू रखें. And as you exhale through the right nostril, you may relax. दाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें. We'll do a short meditation. Keep a gentle smile on your face. चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट. Take a breath in
and out. Become aware of your breath. अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे. Slowly the mind is coming to the present moment. धीरे धीरे आपका मन वर्तमान क्षण में आते जा रहा है. The mind is becoming more clear. मन और साफ होते जा रहा है. Relax more and more. पूरी तरह विश्राम करें. ओम शांति शांति शांति. Take a breath in and breathe out. And slowly and gradually, with a nice smile, you may open your eyes. मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं. How are you feeling in the body and how is the mind? आपका शरीर कैसा है, आपका मन कैसा है? Write down in the chat box and let us know. हमें लिख के बताइए comment section में. You know, for our body, we do the asana, the cleansing, but for the mind, to keep the mind clean, meditation is important. शरीर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई की ज़रूरत है और वो ध्यान से होती है. So quickly write down in the comment section. Also drop hearts. हमें hearts भेजिए आप जल्दी से. And tomorrow, just a little reminder, we have a session on how to burn the fat around the tummy region. आपके पेट के यहाँ का फैट कैसे कम करना है, इसके ऊपर हमारा सेशन है कल. And congratulations to all of you. You're doing very, very well. And just few more days to go of this challenge. Just continue with the same commitment. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक. कुछ थोड़े दिन और बचे हैं. आप इसी कमिटमेंट के साथ रहिए इस चैलेंज में.